हेलो ऑल, मीटिंग यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ. वॉज बिजी इन सर्टन थिंग्स, एकेडमिक थिंग्स. बट वी आर बैक नाउ एंड लेट अस कंटिन्यू अहेड थ्रू आउट द ईयर. सो दिस वीडियो इज फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड. कौन सा वीडियो है? द वन विच डील्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पोलर कोऑर्डिनेट्स. अभी ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये 11th में भी है और 12th में भी है. सेम, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूला इज द सेम. सो लेट अस सी. ओके, सो दिस इज फॉर 11th and 12th. ऑल स्टूडेंट्स रेडी विथ योर नोटबुक? फाइन. चलो, we'll start fresh now. Find the polar coordinates of the point whose Cartesian coordinates are 3/2 minus 3 root 3 upon 2. अभी पोलर और कार्टेशियन क्या है? पोलर यानी the coordinates are represented by r theta. Cartesian यानी the coordinates are represented by x y, which we know as usual. Whenever we plot a point on a graph paper, we require x y. Like this, एक rough diagram निकाला है मैंने. X axis, y axis. X coordinate is positive, y coordinate is negative. X coordinate is positive, y coordinate is negative. Means the point lies in the 4th quadrant. This is 10th standard stuff which you have seen. One thing is clear, the point lies in the 4th quadrant. X coordinate plus, y coordinate minus. So in general, I have shown the point as P, जो coordinates दिए हैं 3/2 minus 3 root 3/2 x y. तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. जनरल एज यूजुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमेशा हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर समथिंग न्यू. ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस सपोजिंग आई जॉइन दिस पॉइंट P to the origin, then I call this as R, which represents distance OP, distance of the point O from the point P, or distance of point P from the origin, R. So we have written here polar coordinates are denoted by R theta instead of x y, R theta. What is the meaning of coordinates? उसका यूज क्या है? कोऑर्डिनेट्स का यूज है टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. एक्स वाई से मिल जाती है एक्यूरेट पोजीशन. आर थीटा से कैसी पोजीशन मिलेगी? फॉर द सेम कोऑर्डिनेट्स वी विल सी. ओके, यू विल वंडर आर एंड थीटा से हाउ आर वी एबल टू शो द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट. वी विल सी, देखेंगे ना. तो पहले आर और थीटा तो फाइंड आउट करेंगे, देन आई विल टेल यू. Okay, so remember we have to find r and theta, which will give us the polar coordinates from Cartesian coordinates, which are x and y. Chalo, formula for r, root of x squared plus y squared. If you draw perpendicular to this and use Pythagoras, you can get that, but उसमें जाना नहीं है अभी. Remember the formula, r is equal to root of x squared plus y squared. Just substitute the values. 3/2 square values डाल दिया अंदर. Y square 3/2 squared is 9/4 minus 3 root 3 upon 2 का square. How will you find out that square? Minus 3 squared is 9, root 3 squared is 3, 2 squared is 4. Simple. So 9/4 plus 27 upon 4. 4 is the common LCM. 9 plus 27. 9 plus 27 gives you 36. 36 upon 4 gives you square root of 9. Square root of 9 is 3. Square root of 9 is actually plus minus 3, but for polar coordinates we take r as positive because it represents distance OP. Distance of the point P from the origin. So r is taken as plus 3 only. Minus 3 नहीं लेने का यहाँ पे. Clear? That is how you find r with the help of x and y by using this formula. Right? Second,
We have to find angle made by this point with the x-axis. Okay. Now observe, what is that angle? See, always in the anti-clockwise direction. Positive angle chahiye, anti-clockwise direction. So that angle is indicated like this. From here to here, 90. 90 plus 90, 180. 180 plus 90, 270. 270 के आगे कितना जाना है वो देखेंगे. See here again. 90 plus 90, 180. 180 plus 90, 270. 270 plus something will give us this angle theta. So let's see now how to get that angle theta. So to get the angle theta, we use the formula tan theta equal to y upon x. Okay, tan theta equal to y upon x. That is, just substitute the values. Minus 3 root 3 upon 2 and 3 by 2. 2 cancels. Or numerator into reciprocal of denominator kar do. 3 cancels, 2 cancels. You get minus of root 3. Right? You get minus of root 3. So tan theta is minus root 3. That is what we get by using the formula y upon x. So there are two formulae to remember. First r, now tan theta. Abhi tan theta ke baad you have to find out theta. Now how to find theta? Tan theta is minus root 3. So theta, okay, first of all, what is root 3? यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan लाना पड़ेगा. So tan 60 is root 3. Pi by 3 means 60. Okay, usually what we do, because tan is present over here, I am getting tan over here. So tan theta is equal to tan of root 3, tan of pi by 3, right? But this minus sign is there. So supposing if this minus sign was not there, our answer would have been theta equal to pi by 3. Over, answer over. But because you can ignore the tan symbol, tan or tan, trigonometric ratio, you can ignore. But because of this minus sign, minus of tan pi by 3 है, you cannot say theta equal to pi by 3. Minus sign का क्या करोगे? So there is a process to remove the negative sign. What is that process? To remove the negative sign, we use tan theta equal to tan of pi minus pi by 3. Formula. To remove the negative sign, we use tan theta equal to tan of pi minus. Okay. This formula is derived from the concept of allied angles, which we did not explain now because we want to focus on the problem. So we will use this formula. देखो, tan theta is equal to tan of pi minus pi by 3. Now pi minus pi by 3 is how much? 3 into pi is 3 pi minus pi, 2 pi by 3. Hence, now you can compare this. Now the negative sign has gone. So now you can ignore tan and say theta equal to 2 pi by 3. अभी यहाँ से इसको कंपेयर करो डायरेक्ट, बिकॉज नेगेटिव साइन हैज गॉन नाउ, चला गया. सो थीटा इक्वल टू 2 pi by 3 इज आवर आंसर. दैट इज द एंगल. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट चेकआउट ये पॉसिबल है क्या, चेक करना है पॉसिबल है क्या अकॉर्डिंग टू आवर रफ डायग्राम. व्हाट इज 2 pi by 3 फ्रेंड्स? pi is 180. Pi means 180, 360. So 2 pi by 3 is 120 degrees. Now let us see, check out the condition. If you start from here, where will you get 120? 90, 90 plus 30. यहाँ पे 120 आएगा, point P, according to what we are getting. Okay, this is 120.
But what is our condition? The condition says the point lies in the fourth quadrant. So it cannot lie in the second quadrant. According to 120 degrees, 120 यहाँ पे आ रहा है. The point is going in the second quadrant, which we don't want, because they have said the point lies in the fourth quadrant. Okay, so if the condition is not satisfied, you have to use one more formula in order to get the answer. Let us check out that formula now. So one formula is to remove the negative sign from tan. Now the second formula is to get the second answer. सेकेंड आंसर क्यों? क्योंकि फर्स्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, उन्होंने दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट, हम लोग जा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो और एक आंसर आना चाहिए. तो दूसरा आंसर कैसा आएगा? So to get second answer, use the formula tan theta is equal to tan of pi plus 2 pi by 3. जो ओरिजिनल आंसर है pi plus, to remove the negative sign pi minus original answer. To go to the second answer, pi plus 2 pi by 3. Why are we going to the second answer? Because first answer is not possible. We are going to the wrong quadrant. So these two formulae you have to remember. Sometimes इसमें अगर आंसर आ गया, if it satisfies the quadrant, then you need not use the second formula, second angle. Okay, directly you get this answer. But now you have to find out. थ्री पाई प्लस 2 पाई है. ऑब्वियसली नेगेटिव साइन इज नॉट हियर, वो पहले रिमूव किया है. tan इग्नोर करो, यू कैन कैंसिल, इग्नोर करो tan. व्हाट डू यू गेट? थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 3. 5 पाई बाय 3 यानी चेक करो अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? It has to, because if the first angle does not satisfy, second angle has to satisfy. Pi means 180. 180 upon 3. 360 is 180. 5 into 60, 300 degrees. Check out. Let us measure 300. How do you measure 300? 90. 90 plus 90, 180. 180 plus 90, 270. 270 के आगे चला गया, that's what we want. 270 plus 30 is 300. वापस देखो, 90 plus 90 180, 180 plus 90 270, 270 plus 30 होने के बाद ये फुल एंगल जो है वो 300 हो गया. And 300 lies in the fourth quadrant, which satisfies this condition. That is our answer. So our answer will be written as polar coordinates r theta. r की वैल्यू कितनी आई है? What was the value? I think we got it as 3. 3 or 6. See whatever the value of r. Okay, इसका स्क्वायर किया है ना, 9 by 4 plus yeah, we had got 3. Theta, either write 300 or 5 pi by 3. So usually we write in terms of radians. These are called as the polar coordinates. Now how do they indicate the position is the last thing that I want to discuss. देखो, एक तो x y से पोजीशन मिल जाती है. दूसरी पोजीशन, from the x axis if you measure 300 degrees and draw an angle, एक एंगल ड्रॉ करने का, इट कैन बी लाइक दिस, फुल लेंथ, कितनी भी लेंथ लो, उसके ऊपर आर मार्क किया 3 सेंटीमीटर्स,
you get the position of the point. That is the meaning of polar coordinates. You get the position of the point by marking theta and r, or r and theta instead of x and y. एंगल ड्रॉ करो, r की वैल्यू मार्क करो, यू गेट पोलर कोऑर्डिनेट्स. दोनों का फंक्शन एक ही है दोस्तों. बोथ इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. वापस सॉल्व करो एग्जांपल, न्यू कंसेप्ट. 11th में भी पूछते हैं, 12th में भी पूछते हैं. यू विल फाइंड इट इजी. फॉर एनी डाउट्स आई एम ऑलवेज देयर, you can ask me. Okay, that will be all for today. Bye, see you.